दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन यूजिंग CNN। तो CNN इज वन ऑफ द डीप लर्निंग टेक्निक एंड हैंड रिटन डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है जो कि MNIST डेटा सेट है विच इज अवेलेबल विथ केरस। तो हम उसको डायरेक्टली केरस से इंपोर्ट कर सकते हैं और वैसे ही करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम टेंसर फ्लो विथ TF एज एलाइस इंपोर्ट करेंगे। उसके साथ केरास में, टेंसर फ्लो के केरास में हमें कुछ लाइब्रेरीज मिल जाएंगे जो कि यूजफुल रहेंगे हमारे मॉडल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें यूज देगा ग्राफिक्स के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। तो हम यहाँ पे चलिए दोस्तों, हमारा इंपोर्ट हो गए लाइब्रेरीज। अभी उसके बाद वाला जो स्टेप है हम करेंगे लोड हमारा डेटा सेट। तो डेटा सेट अवेलेबल कहाँ पे? केरास के अंदर डेटा सेट है। डेटा सेट के अंदर MNIST डेटा सेट है जो कि हमारा 0 to 9 के हैंड रिटन डिजिट्स के इमेजेस है। इमेजेस आर इन द साइज ऑफ 28x28। ठीक है, तो हम सीधा उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में कन्वर्जन भी कर सकते हैं सीधा यूजिंग दिस लोड सर्विस ऑफ केरास इन डेटा सेट। तो उसको पहले तो हम लोग लोड करेंगे। तो वो लोड कैसे हो जाएगा? 4 मैट्रिसेस में लोड हो जाएगा। एक तो हो गया एक्स ट्रे वाई ट्रे, दिस इज फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, एंड देन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, दिस इज फॉर द टेस्टिंग पर्पज। अगेन उसको हम रीशेप करेंगे 28x28x1 में, जो कि ग्रे शेप है उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 255 करेंगे, क्योंकि the values will be 32 bit and that is again converted into 0 to 1. So 0 to 255 values रहेंगे, पिक्सल वैल्यूज, ग्रे स्केल वैल्यूज। तो हम उस ग्रे स्केल वैल्यू को यूजिंग दिस कोड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू 0 to 1। तो दोनों जो जितने भी इमेजेस है हमारे अवेलेबल है एक्स में और वाई में अवेलेबल है अपना टारगेट, मतलब डिजिट का नंबर 0 1 2 3 4। तो वो इमेज कौन से डिजिट का है उसका ट्रेनिंग के लिए उसका जो टारगेट वैल्यू है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये हम करेंगे, अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको। देखिए रन हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप है सिंपल, बड़ा सिंपल सा मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। तो मॉडल डिजाइन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मॉडल में हमें कुछ नहीं, एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का लेयर डाला है। एज इमेजेस तो कम 2D रहेगा उसका, और उसका एक्टिवेशन फंक्शन हमने रेनू लिया है। और इमेज जो भी हमारे इनिशियल इमेज है तो वो रहेगा। उसके बाद में हमने मैक्स कूलिंग लेयर यूज़ किया है। उसके बाद में फिर से कन्वोल्यूशन एंड मैक्स कूलिंग लेयर यूज़ किया है। उसके बाद में लास्ट में हमने फ्लैटन किया है। एंड यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में डेंस लेयर है जिसमें रेलू रहेगा, और लास्ट में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन रहेगा। तो सब शुरू में जो यूज करते हैं मोस्टली डिजिटल CNN में तो रेलू फंक्शन ही रहता है, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन रहता है वो सॉफ्ट मैक्स ही रहता है। और उसके बाद में हमें मॉडल समरी देखने को मिल सकता है। तो हम रन करते हैं इसको, और इमीडिएटली आफ्टर दैट वी कैन सी द मॉडल समरी। देखिए यहाँ पे आ गई है मॉडल समरी। तो आउटपुट शेप आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में पैरामीटर्स कितने यूटिलाइज हुए वो दिख जाएगा, कितने पैरामीटर प्रोसेस हुए, ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर इसमें 0 है, मतलब ऑल पैरामीटर्स आर ट्रेनेबल। उसके बाद में हम कंपाइल करेंगे इसको। ऑप्टिमाइजर ऑफकोर्स एडम लिया है। उसके बाद में लॉस फंक्शन हमने लिया है, और मैट्रिक्स जो रहेगा अपना टेस्टिंग का तो वो एक्यूरेसी मैट्रिक्स रहेगा। हम इसको रन करते हैं, और अभी लास्ट स्टेज है ऑफ टेस्टिंग, सो सॉरी ट्रेनिंग। तो अभी इधर जो है वो हिस्ट्री नाम का जो है उसमें हम लोग मॉडल को फिट करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। इपोक हम ले लेंगे 5, और हमारा वैलिडेशन स्प्लिट रहेगा 10%, और बैचेस हमने 64 लिए। तो चलो इसको हमें ट्रेनिंग देखने को मिलेगा अभी।
यहाँ पे देखिए अब ट्रेनिंग हो रहा है पहला इपोक, accuracy is coming around 74%, 75% in first week of itself. हम यहाँ पे accuracy expect करेंगे, it should be above 90-91% accuracy. That will be, I think, good enough for us. चलिए 90 तक तो अभी जा रहा है ये फर्स्ट इपोक itself. In first epoch itself, it has reached above 94% of accuracy, and in second epoch it is going about 98% of accuracy till now. Yes, at the end of two epoch it is reached above 98% of accuracy. At the end of three epochs we can see the accuracy is again going close to 99%. So at the end of fourth epoch we are reached accuracy, we reached above 99%. See the beauty of deep learning, deep neural network. So such a simple model we have prepared, only 2-3 layers, and handwritten images of digits. It is identifying so properly. This is the last epoch, 5 out of 5. It is taking about 3 minutes for each epoch to train the model. And gradually you can see these accuracies go on increasing.
Yes. At the end of fifth epoch, it has reached to the accuracy of 99.30%. It means it is almost very much closer to the 100% accuracy. Then after that we will evaluate this model. So what are the losses and what is the test accuracy we have to find out by using this evaluate service in the model. And for that we are using the test data. The test data is the data which we haven't shown to our training. So in training we have used only training data. For testing we are using data which we have kept aside, and that data we are using here for the testing purpose. So we will see how much model is good in prediction for the unknown data. So it is again very good. It is 99.02% accuracy. So almost again close to it. So it is working very properly for training, invalidation data, as well as unknown data which is we have kept aside. So 99% is very too good accuracy actually. So we will see now predictions. For example, or we have given the image. Images are having the indices. Means whatever is the data set available with us, 0 to number of images that data set is there. So we will give the indices one by one, and we will check. Means in testing there are number of images, right? So all those images we are giving the particular various images, and we will test whether that is identified correctly or not. Like we can see here, it is a 0, but and predicted is also 0. We will give another image, for example image number 6 we will give. So that may be some other data set available. So this is a 4 and it is again predicted 4. One more image we can give, for example 25th indice we will give in the testing. These are the testing images, grayscale testing images. Data set which is unknown image for our, we have kept testing data which is not given for the training. So image number 30 we will test, and so it is identifying very properly that what is the target value. See, this is handwritten 3 and predicted value is also 3. So this is how our model is trained very perfectly for both training, testing and validation data, and this is how we can develop our CNN artificial intelligence using the CNN model, which is a part of deep learning. Thank you for attending. If any query you can write me. Thank you.